कोविड सूच्यौषधाभियानस्य द्वितीयं चरणं जवीयस्य गत्या प्रवर्तते। सम्प्रति यावत् 54 लक्षाधिकैककोट्यधिकजनेभ्यः कोविड सूच्यौषधं प्रदत्तम्। 45तः 60 वर्षदेशीभ्यः 2 लक्षाधिकेभ्यः जनेभ्यः कोविड सूच्यौषधं प्रदत्तम्। केषुचित् राज्येषु कोरोना प्रकरणानि नितरां प्रवर्धन्ते। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्णाटक राज्येषु कोरोना प्रकरणानि प्रवर्धमानानि सन्ति। स्वास्थ्यमन्त्रालयेन निगदितं यत् विवाहस्थलेषु विनिर्धारितसंख्यातः अधिकजनाः सम्मिलिताः भवन्ति। स्थानीयनिर्वाचनं जनानाम् अनवधानात् चास्ति अत्र कारणम्। पश्चिम बंगाले, असमे च प्रथमचरणे निर्वाचनस्य अधिसूचना अनन्तरमेव निर्वाचनप्रसारे दृश्यते गति। पश्चिम बंगाले गठबन्धन अधिकृत्य कांग्रेस दले आन्तरिक कलहो जायते। दिल्ली नगरे निगमस्य 5 तालुकानाम् उपनिर्वाचनस्य मतगणना अद्य भविष्यति। गुजरातस्य स्थानीय निगम निर्वाचने पंचायत निर्वाचने च भाजपा दलेन अभूतपूर्वा विजयश्री अधिगता। परिणामानन्तरं भाजपा दलस्य कार्यकर्तृभिः आमानितः महोत्सवः। पराजयानन्तरं कांग्रेस दलस्य प्रदेशाध्यक्षेण समर्पितं त्यागपत्रम्। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगेन जम्मू कश्मीर प्रकरणं समुत्थापितं। पाकिस्तानम् अतर्जयत् भारतम्। पाकिस्तानस्य दुष्प्रचारः च निराकृतः। भारतेन उदीरितं यत् पाकिस्तानदेशः प्रथमं स्वस्थितिम् अवलोकयेत्। आतङ्किभ्यः आश्रयं पृच्छति अयं पाकिस्तानदेशः। म्यांमारे आंग सांग सूचीवर्यायाः समर्थनं सुतरां प्रवर्तते। म्यांमार शान्तसमित्या च 4 कार्यवाहकमन्त्रिणां नामानि उद्घोषितानि। सूचीप्रशासनस्य अपाकारणं वर्तते असंवैधानिकम्। सिंगापुरस्य प्रधानमन्त्रिणा सूचीवर्यायाः विमुक्ति अनुशंसिता। निगदितं च यत् प्रतिबन्धनेन च जनैः कष्टानि अनुभूयन्ते। अभिवादये, अहमस्मि परमेशः। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री अद्य आयव्ययपत्रकस्य घोषणाः आधृत्य एकं दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय सम्मेलनं सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री आत्मनिर्भर भारताय शिक्षां, शोधं, कौशलविकासं विवर्धयितुम् एकम् उद्घाटनसत्रं सम्बोधयिष्यति। शिक्षाशोध कौशलविकासानां क्षेत्रे आयव्ययपत्रके घोषणानाम् उपरि विशेषबलं भविष्यति। अशेषे हि देशे साम्प्रतं यावत् 54 लक्षाधिकैककोटिकेभ्यः जनेभ्यः कोविड-19 कोरोना प्रतिरोधी औषधोषधं सुलभायितम्। केन्द्रप्रशासनेन ह्यः कथितं यत् देशे साम्प्रतं कोविड महामारी कारणेन सक्रियप्रकरणानां संख्या संक्रमणपुष्टिगतानां संख्यायाः 1.51% यावत् विद्यते। अपि च स्वास्थ्यमितिः 97% यावत् विवर्धिता। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह सम्भाषमाणा स्वास्थ्यसचिवा राजेश भूषणो अकथयत् यत् राज्यद्वयस्य रोगिणां संख्या 40तः अधिका विद्यते। यद्धि देशे प्रवर्तमान रोगिणां 75% विद्यते। असौ अवोचत् यत् गतसप्ताहद्वये दैनिक संक्रमण प्रकरणे सामान्यस्तरीया वृद्धिः अंकिता। अवधेयास्पदं विद्यते यत् देशे कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधाभियानं प्रवर्तते। भारत का जो वैक्सीन है आत्मनिर्भर भारत में मेड इन इंडिया, ये सिर्फ भारत ही नहीं, लगभग 2 दर्जन से अधिक दुनिया के देशों में जा चुका है। नेपाल में, बांग्लादेश में, आपके अफगानिस्तान में, श्रीलंका में, ब्राजील में और कई देशों में। तो मैं ये आग्रह करूंगा कि ये तो भारत के डॉक्टर वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसका तो सम्मान करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब पूरे देश में एक नया उत्साह आया है तो अब कृपा करके इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा आज अपने विपक्ष के नेताओं से कि आप भी कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लीजिए। टीकाकरण माध्यमेन यत् एकत्र कोरोना नियंत्रण प्रयासाः जायन्ते, तत्रैव अपरत्र केषुचित् राज्येषु प्रकरणानि सजवं प्रवर्धमानानि दृश्यन्ते। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्णाटक इत्यादिषु 5 राज्येषु सक्रियप्रकरणानां 84% प्रकरणेभ्यः अपि अधिकप्रकरणानि सन्ति। स्वास्थ्यमन्त्रालयेन भणितं यत् विवाहादिषु प्रवर्धमान जनसंवर्धनेन स्थानीयनिर्वाचने जायमान प्रमादेन च संक्रमणं जायते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विश्वस्य राष्ट्राणि भारतस्य विकासयात्रायां सहभागितायै आमन्त्रितानि।
यः दृश्यश्रव्य इति अन्तर्जालीय माध्यमेन एतद्वर्षीयं मेरीटाइम इंडिया समिट शिखर सम्मेलनम् उद्घाटयता श्रीमोदिना अवादीत् यत् भारतं सामुद्रिक क्षेत्राणां विकासाय गभीरमस्ति। सामुद्रिक जीवजन्तूनां वनस्पत्युत्पादान् समेत्य विभिन्न क्षेत्रेषु समुत्पन्न सामुद्रिकार्थव्यवस्था रूपेण समक्षम् आयाति। एतत् शताब्दिकस्य त्रिदिवसात्मकस्य मेरीटाइम इंडिया इति शिखर सम्मेलनस्य आयोजनं जलपोत्पत्तनेन पोतपरिवहनेन जलमार्ग मन्त्रालयेन च विधीयते। श्रीमोदी अकथयत् यत् देशस्य आधारभूत संरचनायाः समुन्नयनेन अपि च आर्थिक परिष्कार कार्यक्रमं संवर्ध्य वयम् आत्मनिर्भर भारतस्य परिकल्पनां सुदृढयितुम् इच्छामः। प्रधानमन्त्री मोदी कथितवान् यत् पारादीपे जलपोतपत्तने विश्वसनीय सौविध्यं प्रकल्पयिष्यते। As far as creating new infrastructure goes, I am delighted to share that mega ports with world-class infrastructure are being developed at Vadhavan, Paradip and Din Dayal Port in Kandla. Ours is a government that is investing in waterways in a way that was never seen before. Domestic waterways are found to be cost-effective and environment-friendly way of transporting freight. We aim to operationalize 23 waterways by 2030. असम पश्चिम बंगालयोः प्रथम चाक्रिक निर्वाचनार्थं निर्वाचन प्रक्रिया अस्ति समारब्धा। एतदर्थम् अधिसूचना प्रख्यापिता अस्ति। अस्मिन् प्रथमचरणे पश्चिम बंगालस्य 30 विधानसभा सनेभ्यः असम राज्यस्य च 47 आसनेभ्यश्च अस्य मासस्य 27तमे दिनाङ्के मतदानं समायोक्ष्यते। आगामी 9 दिनाङ्कं यावत् पंजीकरणं विधास्यते। अग्रिमे दिवसे नामाङ्कनपत्राणि अन्वीक्ष्यन्ते। 12 दिनाङ्कं यावत् नामाङ्कनं प्रत्यावर्तितुं समयो विद्यते। पश्चिम बंगालस्य अपर निर्वाचनाधिकारिणा संजय वसुः इत्यनेन सूचितं यत् निर्वाचनार्थं समयः 6:30 यावत् विवर्धितः। अवधेयमस्ति यत् पश्चिम बंगाले एषमो विधानसभा निर्वाचनानि 8 चरणेषु संपत्स्यन्ते। अपरतः असम राज्ये 3 चरणेषु विधानसभा निर्वाचनानि संपत्स्यन्ते इति। एतस्मिन् चरणे 80 लक्षाधिकाः मतदाताराः स्वीयमतं प्रयोक्ष्यन्ते। पश्चिम बंगाले असमे च प्रथमचरणस्य निर्वाचनम् अधिसूचनायाः परं निर्वाचन प्रसारे वेगः विवर्धितः। उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री भाजपा दलस्य नेता योगी आदित्यनाथः मंगलवासरे बंगाले निर्वाचन जनसभां समबोधयत्। बंगालस्य मालदायां योगिनः आदित्यनाथस्य जनसभा अभूत् यत्र तेन ममता प्रशासनं भृशं विनिन्दितं। सः कथयत् यत् बंगाले जय श्रीराम इति कथनेपि प्रतिबन्धः वर्तते। आज बंगाल में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं करने दिया जाता है और आज बंगाल के अंदर एक तरफ यहां पर जिस बंगाल ने आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था, आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं और साथ साथ यहां पर तस्करी और गौ तस्करी के माध्यम से यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है। यहां की सरकार मौन बनी रहती है। भाइयों बहनों, बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का हर्ष आपने देखा है क्या हो गया है और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। निर्वाचन आयोगेन अद्य देशस्य 5 राज्यानां निर्वाचन दिशा आरक्षकाणां
व्ययपर्यवेक्षकाणां सुरक्षाधिकारिणां च उपवेशनं समाहूतम्। उपवेशनस्य लक्ष्यं कोरोनाकाले सुव्यवस्थित निर्वाचनम् आसीत्। अस्मिन् निर्वाचने आयोगस्य समक्षं स्वतन्त्र निष्पक्ष पारदर्शी नैतिकताभिः साकं कोविड सुरक्षया निर्वाचनाय प्रतिबद्धता वर्तते। राजस्थाने भाजपा दलस्य प्रदेश समितेः उपवेशनं सम्बोधयन् दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षा जेपी नड्डा अकथयत् यत् अत्यन्तं प्रसन्नता विषयः यत् सर्वत्र कमलं विकसति। असौ अकथयत् यत् सर्वस्तरे दृढ़तायाः आवश्यकता वर्तते। सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ और सक्रिय तना प्रमुख, ये 3 लक्ष्य हमको 2021 में पूरे करने हैं। 6 अप्रैल स्थापना दिवस से पहले सभी मंडल सशक्त हो जाए, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। और इसलिए जब हम संगठनात्मक विषय की बातचीत करते हैं तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप ये रचना कीजिए, यहां इस कार्यकारिणी की बैठक के पश्चात योजन कीजिए कि कैसे सारे सशक्त मंडल हो सकते हैं और उनकी तारीख 6 अप्रैल है। दिल्ल्यां दिल्ली नगर निगमस्य 5 तालुकानाम् उपनिर्वाचनस्य परिणामः अद्य आयास्यति। मतगणना सम्बद्धा सज्जता पूर्णतां गता। केन्द्रतुष्टये मतगणना प्रातः 8 वादने समाप्स्यते। दिल्ली नगर निगमस्य उपनिर्वाचनं फरवरी मासस्य 28 दिनाङ्के अभूत्। गुजराते स्थानीय नगरे निगमस्य पञ्चायतस्य च निर्वाचने भाजपा दलस्य ऐतिहासिकः विजयः। गुजराते तालुका पञ्चायते 47+/7 आसन्दिकासु, जिला पञ्चायते 80+900 आसन्दिकासु, नगरपालिकायां 20+27 आसन्दिकासु च निर्वाचनम् अभूत्। भाजपा दलेन तालुका पञ्चायते 33+23, जिला पञ्चायते 78+500, नगरपालिकायां 24+18% च आसन्दिकाः जिताः। कांग्रेस दलेन 15-2000 वर्षात् अपि अधिकस्थाने पराजयः प्राप्तः। परिणामात् परं भाजपा दल कार्यकर्तृभिः उत्सवः आचरितः। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी विजयं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिना अमित शाहस्य च नेतृत्व विकासकार्ययोः फलम् अकथयत्। पराजयात् परं कांग्रेसस्य प्रदेशाध्यक्षा अमित चावडा पदत्यागपत्रम् अदात्। भारतं कठोरतया व्यवहरत् यत् इस्लामिक संगठनाय OIC इत्यस्य नास्ति अधिकारो भारतस्य अभिन्नाङ्गस्य जम्मूकश्मीरस्य विषये किमपि टिप्पणं विधातुम्। भारतं संयुक्तराष्ट्रमानवाधिकारपरिषदि स्वीय प्रत्युत्तराधिकारम् उपयुज्य अकथयत् पाकिस्तानं संयुक्तराष्ट्रद्वारा घोषितानाम् आतंकिनां शरणस्थली समभवत्। संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि भारतीयाभियाने भारतस्य प्रतिनिधि पवनः वाधे अवोचत् यत् पाकिस्तानम् आतंकिभ्यः आश्रयस्थानं कुख्यातम् विद्यते। असौ इत्यपि कथितवान् यत् इस्लामिक सहयोग संगठनाय जम्मूकश्मीर विषये टीकां कर्तुं नास्ति कोऽपि अधिकारः। We exercise our right of reply to the statements made by Pakistan and the OIC under the agenda item 2. The COVID-19 pandemic has changed the way we are conducting this session. However, Pakistan's deliberate misuse of this august forum for its malicious propaganda against India, aimed at diverting the attention of the Council from its own serious violations of human rights, has remained a constant. Madam President, the members of this Council are well aware that Pakistan has provided pensions to dreaded and listed terrorists out of state funds, and has the dubious distinction of hosting the largest number of terrorists proscribed by the United Nations. We reject the reference to the Union Territory of Jammu and Kashmir in the statement of the OIC. It has no locus standi to comment on matters related to Jammu Kashmir, which is an integral and inalienable part of India. म्यांमारे विगतवर्षे नवंबर मासस्य 8 दिनाङ्के संसदे चितानां सदस्यानां समितिः देशस्य कार्यवाहकमन्त्रिणां सूचीम् अघोषयत्। म्यांमारे अद्यपि विरोधप्रदर्शनं जायते। आरक्षकबलेन मंगूले प्रदर्शनकारिणां संवर्धविच्छेदाय बलप्रयोगः कृतः। म्यांमारे फरवरी मासस्य 1 दिनाङ्कं यावत् 21 जनानां मृत्युः अभूत्। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।